Assalamu alaikum students. Today the topic of our essay is cyber crimes. First we will define it. We will give a brief introduction and we will define it as cyber crimes are crimes which require a computer as a tool for committing a crime. In cyber crimes, a computer or a network is involved in committing a crime. So this is a very important topic. Then you have to highlight the importance of the topic, that this is a very important topic because it is a current issue and not many people have got awareness about it, and it is important to that people should know about it so that there will be solutions for it, for its elimination and for handling this type of crime. And there are different types of cyber crimes. In the next paragraph you have to give a detail of the types of cyber crimes because there are many different types of crimes. Hacking is one kind of crime. It is a very common kind of crime in which the hacker just without your permission he accesses all your information. He intrudes your accounts, you can say, without your permission. He intrudes your computer system. He can get important information, and his purpose can be anything. His purpose can be to take all your banking information, to take some financial benefit, or to just steal all your information and gain power, and purpose can be just to tease you even. So this is one kind of cyber crime, especially if it involves stealing banking information. Viruses, malwares, worms, these are types of viruses which damage your computer. These are softwares which are written with the intent of causing harm to the data and devices. And there are different types of malwares. Trojan and spyware are malwares, and these malicious software, they enter your computer system and they cause havoc by damaging your computer. And the purpose of the culprit can even be to steal information and other important information for gaining some kind of material benefit or financial benefit even. So you need to protect yourself from this type of crime as well. And then ransomware is the more dangerous kind of a cyber crime because the purpose of this is to encrypt the files. Especially it is dangerous for those who are working in sensitive departments, in sensitive institutions, companies. Their data is important, so the purpose of this kind of a virus is to encrypt files, which means that you can no longer access them, you can no longer open them, and this virus just enters your computer and it prevents you from accessing your own files. It takes control of your computer, and the attacker, he will either send a notification to demand a large sum of money to return your data back. So that's why it is called ransomware. And then email bombing or spamming is another kind of a cyber crime because the purpose of this is to damage a person's server or damage a person's crash a person's computer. A lot of overload of emails is directed to one email address, which causes you can say the server to crash, or it can even make the server sluggish. He might not necessarily steal something from you, but the purpose is to, you can say, cause trouble. This can cause a lot of trouble for those who have got important data on their computers. Identity theft is the most common kind of a cyber crime in which the criminal, he steals your information, all your credit card information, your email address and your passwords and other things and everything, and then he pretends to be you. He can steal all your information and then he can pretend to be someone else. He can create new banking accounts, he can send messages and other things by pretending to be you or someone else. He can pretend to be someone whose account he has stolen, whose information he has stolen. Data breach or data diddling is changing data
by you can say the attacker. He can make important changes in the data, which can become very difficult if that data is of a financial nature. He can change financial figures up and down, which can make things very complex, and he can also disturb the entire system, and he can make the entire system useless. The data breach can be of a serious nature if it involves financial figures. Phishing scams is something which you have known for many years, but you were not aware of, people were not aware of. Phishing scams is like you receive a phone call and the person on the other side says, congratulations, you have received an award of you have received a prize of 10 lakh or so, you have won a lottery and so and so. And he then asks your information, give your account number and your ID card number and other details. So now people are much aware that these are just scammers, and they are just trying to trick you into giving your personal information, such as your bank account numbers, your password, your credit card numbers, your ID card numbers. Now they have taken a new form. एक नए तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं. अब ये नहीं कहते कि आपको कोई इनाम मिलने लगा है, अब कहते हैं कि आपके अकाउंट को कोई ख़तरा है, वी आर सीइंग सम प्रॉब्लम इन योर अकाउंट, so give us your information so that we can sort it out. Or they are not actually asking you to give your information, they are in fact stealing your information for their own purpose. और online scams पे ये pop-up ads आ जाते हैं, या suddenly you receive a message कि you have received so and so prize and so money, you have won, they then ask you, if you click them they will ask you to give your personal details. These are also fake, and they are also scams, and they are befooling you, and they are tricking you into giving your personal details. Child soliciting and abuse is one serious kind of a cybercrime which is committed online. बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में क्राइम्स कमिट होते हैं हर तरह के, उसी तरह डिजिटल जो सोर्स है, कंप्यूटर साइबर सोर्स, इस कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है हर तरह के वही सारे क्राइम्स करने के लिए जो रियल लाइफ में कमिट किए जाते हैं. चिल्ड्रन शुड बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ क्राइम, बिकॉज हेयर द क्रिमिनल ही प्रिटेंड्स टू बी अ चाइल्ड, ही मे befriend you through chat rooms, by chatting and through other source. दूसरे chat rooms के थ्रू जो perpetrators हैं, perpetrator, he might pretend to be a child himself, he might try to befriend a child, और उस बच्चे से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस, उससे दूसरी चीज़ें एक्सचेंज करने को कह सकता है, उससे उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले सकता है, उससे मिलने को कह सकता है. सो दिस कैन बी वेरी सीरियस, एंड दिस नीड्स टू बी checked. चाइल्ड सॉलिसिटिंग एंड एब्यूज़, और बच्चे को भी अपने से ऐसे शो कराएगा कि वो बहुत उससे क्लोज़ है, या ही इज़ वेरी सिंसियर विद द चाइल्ड. पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ इट कि ऐसे ख़तरात भी हैं कि द पीपल हु आर ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद द चाइल्ड मे नॉट नेसेसरीली हैव लव फॉर चिल्ड्रन और अ वेरी यू कैन से गुड इंटेंशन. ये सारे क्राइम्स भी कंप्यूटर पे पॉसिबल हैं, बल्कि हो रहे हैं. चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक्सचेंज होती है इसके थ्रू. साइबर बुलिंग जिस तरह स्कूल में की जाती है बच्चों की आपस में बुलिंग, यूजुअली टीनेजर्स इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी. किसी एक बच्चे को ही टारगेट बना लिया, उसको जो है मैलिशियस मैसेजेस सेंड कर दिए ग्रुप में, या उसका मजाक उड़ा दिया, या उसके अगेंस्ट कोई रूमर्स फैला दिए, थ्रेट्स उसको दी, या उसकी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी. सो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ बुलिंग. लेकिन अगर ये किसी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए यूज़ हो रही है, गलत मैसेजेस किसी के बारे में स्प्रेड किए जा रहे हैं, देन इट इज़ अगेन अ क्राइम. So purpose of the criminal is to sell illegal items online, infringe copyright material होता है जिसको आप कॉपी करके नहीं आगे बेच सकते, लेकिन ये भी साइबर क्रिमिनल्स करते हैं. ऑल्दो आपको फ़ायदा हो जाता है, चीज़ सस्ती मिल जाती है, बट स्टिल इट्स अ क्राइम दोज हु कमिटेड, कि किसी प्रोड्यूसर की चीज़ लेके उसको कॉपी करके आगे उसको भेज दिया, बिकॉज द प्रोड्यूसर इज़ नॉट गेटिंग एनी फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर हिज ओन प्रोडक्शन. एंड देन illegal gambling
ये सारे क्राइम्स भी हैं। इलीगल इंटरसेप्शन और स्टीलिंग डाटा, गेनिंग मनी थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़, ये बेसिक पर्पस होता है साइबर क्रिमिनल्स का कि जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ आप रियल लाइफ में देखते हैं वही सारी इलीगल एक्टिविटीज़ यू विल व्यू देम, यू कैन दे सी दैट दे आर गोइंग ऑन थ्रू कंप्यूटर। स्मगलिंग है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई या फोर्नोग्राफी हो गई, ये सारी ऑनलाइन हो रहा है अब ये सारा कुछ। सो दीज आर सम स्टेप्स विच यू कैन टेक फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ये आपको वैसे भी पासवर्ड बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट होता है, दैट इज़ वन पर्पज़ कि आप साइबर क्रिमिनल्स से बचे रहें। डोंट ओपन स्पैम ईमेल्स आपके आके एक जंक मेल्स या स्पैम में आके जो जमा हो जाती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ओपन एंड सी एवरी मेल. It can be a virus or it can be anything. Use an antivirus software and keep your software and operating system updated. एंटीवायरस को अपडेट करते रहें अपने. डोंट क्लिक ऑन अनट्रस्टेड वेबसाइट्स. यू कैन नॉट क्लिक ऑन एवरी वेबसाइट कि हर वेबसाइट को खोल के देखें. जिनका नहीं पता होता वो ना ही खोली जाएं तो बेहतर है. दे कैन एनक्रप्ट योर सिस्टम. डोंट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनलेस सिक्योर. यू कैन बी आस्क्ड, जैसे पॉपअप एड्स में पूछा जा सकता है कि यू हैव वन दिस प्राइज एंड वी नीड योर बैंक अकाउंट नंबर एंड अदर डिटेल्स. सो you do not have to share your personal information unless and until you know that this is a safe place to share. Be vigilant about young children's activities on internet. ये parents के ऊपर है कि they should be vigilant about their children's activities, not just young children, they are teenagers as well. Conclusion आपने देना है. Suggestions you can give that the government should make rules and makes you can say they should adopt some ways, or they should be update themselves about criminal activities and how to catch criminals, cyber criminals, because this is something which requires you can say know-how of computer and internet, and how they should update themselves in catching cyber criminals. कि हमारे यहाँ इतनी अपडेट नहीं है कि लोग इस मामले में कि दे शुड बी नोइंग हाउ टू अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स एंड हाउ टू कैच द साइबर क्रिमिनल्स. इसके बारे में आपने सजेशंस देनी है कि ये तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स इंटेलिजेंस के दे शुड बी हैविंग सच knowledge about how to catch these cyber criminals. You have to wind it up. अपनी तरफ से suggestions जो हैं कुछ steps बता के then you have to end it.